नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। नेशनल अवार्ड विनिंग मूवीज के डायरेक्टर, LGBTQ राइट्स एक्टिविस्ट ऑनिर के साथ हाल ही में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ये कंट्रोवर्सी तब हुई जब भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से अचानक उनके इनवाइट को कैंसिल कर दिया गया। फिलहाल इसके पीछे राइट विंग ग्रुप के प्रेशर को बताया जा रहा है। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं खुद ऑनिर से। ऑनिर, you were invited to भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल टू डिस्कस द इशू ऑफ गे राइट्स। तो वहां से आपको क्या कहा गया और लास्ट मिनट इनवाइट कैंसिलेशन पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं तो रेडी था एयरपोर्ट जाने के लिए। आई वाज अबाउट टू लीव और मुझे एक पहले एसएमएस आया कि फ्लाइट कैंसिल हो गया। और जब मैं ट्रैवल एजेंट को फोन किया, वो बोला नो, मुझे बोला गया है कि आपका टिकट कैंसिल। So I was a little confused कि क्या हो गया, because the organizers didn't even bother to call me up first and मुझे बताया नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने जब फेस्टिवल का डायरेक्टर राघव को फोन किया, उसने बताया कि लास्ट 2 days आई वाज ट्राइंग टू टेक्स्ट यू, लेकिन पता नहीं, and it's something big like this, someone can just call me up, मुझे एक ट्रैवल एजेंट बता रहा है कि कैंसिल हुआ है, इज एब्सोल्युटली नॉट ओके। एंड उन्होंने बताया कि लास्ट 2 दिन से यहाँ बहुत डिस्कशन चल रहा है कि कोई ग्रुप प्लान कर रहा है बड़ा सा प्रोटेस्ट एंड टू अटैक, एंड पुलिस यहाँ से बोला है कि दे कांट अश्योर योर सिक्योरिटी। Oh God. तो फॉर मी जो which again जब मैं सोचता हूँ, पहले तो बहुत दुख हुआ, उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि if someone is supposed to attack me and my safety, तो मुझे क्यों नहीं बता रहा है कि ये कौन है? Because मेरे as a person I don't know, I don't have any enmity with any group. मैं जा रहा था भोपाल एक non-political literary festival पे to discuss my book. Actually, it's not even gay rights. It's about my book that I was invited, which is out for 6 months. There's nothing, no controversy about the book. So, and Bhopal में मेरा I have a long relationship with Bhopal. I love the city. जब Supreme Court ने 377, when they had overruled 377, तब 2018 में I shot a short film celebrating the Supreme Court decision, which I shot in Bhopal, created an parade. Over the last few years, my Ministry of Tourism मध्य प्रदेश के साथ बहुत सारा जगह जाकर vlogs किया, ओरछा, खाजुराहो, सांची, भोपाल. I have recently written an entire script which I want to shoot in Bhopal. So this comes as a surprise, and it makes me very sad कि ऐसा last minute to be dropped, and also कोई बता नहीं रहा है मुझे कि what is the problem, क्यों इन लोग मेरे खिलाफ है और ये कौन है? If someone is supposed to attack me, at least I need to know na who are these people. Yes, of course. And sadly, the organizers didn't inform you, and some travel agent is informing you about that is sad. So, and, sorry, please. That's okay. So, what could be the reason behind the last minute cancellation? I mean, इसके पीछे कोई political pressure है या पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग को आपके मिले सपोर्ट, या ऐसा कोई रीजन है जो आपको समझ में आता हो? मतलब हम ये हाइपोथेटिकली बात करें। मुझे दुख होगा if that is any of the reason, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है. Either my support for anything should not be the reason for police saying कि मुझे protection नहीं दे सकता है, because I am not the criminal. I have not done anything wrong, so why am I कि गुंडे लोग खुलेआम धमकी दे रहा है और मैं नहीं जा पा रहा हूँ जहाँ से I was looking forward to this. और मुझे ये भी I find it very strange क्योंकि Twitter में मैंने immediately I didn't talk about it क्योंकि I was waiting to know कि क्या है. लेकिन वहाँ भोपाल से कोई who is connected to Bharat Bhavan or the place, yes. He put out a tweet saying that Onir is respected filmmaker, लेकिन
भारत भवन में ये सब नॉनसेंस हम नहीं होने देंगे एंड ये सब डिस्कशन ये जगह पे नहीं हो सकता है. सो ही वाज द वन हु स्टार्टेड. तो मुझे इनिशियली लगा कि ओके दे हैव अ प्रॉब्लम विद द subject, which again then it's the job of the state and the police to give protection क्योंकि Yeah, we are decriminalized and recognized by the state. of course. तो उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि एक्चुअली पैनल डिस्कशन का जो थीम था उसको चेंज करके दे हैड द पैनल डिस्कशन विद माय अदर को पैनलिस्ट कल्की सुब्रमण्यम who is a trans activist. And she mentioned, she talked about me not being there. तो उससे क्लियर होता है कि सब्जेक्ट से ज्यादा मुझसे प्रॉब्लम. मुझसे प्रॉब्लम है, yes. और मुझे पता नहीं है क्यों मुझसे प्रॉब्लम है, किसको मुझसे प्रॉब्लम है. और मुझे लगता है दैट इज वेरी अनफेयर क्योंकि क्यों ऐसा किया जा रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि आई डोंट नो, यू नो, बिकॉज I don't want to even blame any political party because I don't know, you know, because I have not done anything against anybody. My support to any party does not mean I'm against. You know, it's in Yeah, democracy, yeah, it's normal, ना हर yeah. किसी का कोई party के साथ ना. तो ऑनर एनीवे LGBTQ कम्युनिटी इज स्टिल नॉट देयर. तो क्या लगता है आपको कि LGBTQ कम्युनिटी हैज फॉट अ लॉन्ग बैटल फॉर देयर लीगल राइट्स इवन दो. You know, मैं थक गया कि सोचा कि अभी इतने साल बाद 2018 we were decriminalized. Right now, even you know, RSS chief, he spoke about how, you know, the LGBT community has the right to live, and we're talking about marriage rights, and then something like this happens. You know, और लोग सोचते हैं कि जिंदगी भर यही लड़ाई लड़ते जाएंगे क्या, एंड ये सोचते हैं कि क्यों किसी को मेरा खुशी से तकलीफ है. मुझे तो किसी का खुशी से तकलीफ नहीं है. मैं तो, you know, so how does our happiness, how does my wanting to love someone and live in happiness affect their life? एब्सोल्युटली. I'm not harming anybody. मैं तो किसी को मार नहीं रहा हूँ, मैं किसी के against गंदे बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूँ. और you know, people have a problem about my love, you know. तो ये it's very sad कि वो खुलेआम घूम रहे हैं और मैं नहीं जा पा रहा हूँ जहाँ पे all I want to talk about is love. Yeah. So Onir, since your beginning in Bollywood, have you faced discrimination and challenges to be accepted? Uh, Within the industry, as a person, I've never faced any discrimination, and I think Bollywood as a place, the Hindi film industry as a space is overall a very, very inclusive, diverse space, and nobody cares about your sexuality, race, gender, religion. They care about what you can do as an artist. Having said that, the challenges are to tell the stories I want to, because they're not, you know, like वो 100 crore वाला subject नहीं है, perceived as that. तो Yeah. वो बनाने में मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि तो अभी भी बॉलीवुड में जो है LGBTQ is not, you know, that subject of filmmaking in the vital place. subject, it is a subject of filmmaking as long as वो थोड़ा subtle रहे. मतलब वो डेप्थ Like में तो अभी भी या समझाना तो मुझे ऑडियंस लगता तक. है कि मेरा जिंदगी तो बेबी स्टेप्स नहीं है. मेरा जिंदगी, मेरा इतना ही हक है कि आप आपकी जिंदगी के बारे जैसा कह सकते हैं, वैसा मैं अपनी जिंदगी के बारे कह सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ सिनेमा. क्यों, why do I have to be subtle, why I have to tone down, you know, my existence, my love, my desire, you know. So I don't think that the industry and the audience at large is yet ready. Lekin that does not stop one. We keep telling our stories because we are living our life. Absolutely, yes. So, Onir, same-sex marriages are still not legally accepted in India. I mean, Supreme Court is hearing the case. Do you expect a landmark verdict in this regard in near future? I would expect that because I feel that the Supreme Court over the last few years have taken some really, really
commendable, judgments. It's never been easy because even after the Delhi High Court, first it got overruled and again, But I feel that more and more people also realize that by allowing, if you can allow sex, why can't you allow love? And, Absolutely. why can't, more children who are probably, who can be adopted, who can get a home? Why don't you want people to be able to legally buy a house, live together Live as a together. family? Isn't it something that we are always talking that how India is a country that values family? So we are also family. What stops you from making family? And जो लोग बोलता रहता है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमेशा हमारी लिटरेचर में, हमारे आर्ट में, हमारे स्कल्पचर में, we have been a part of Part. our society. लोग भूल जाते हैं कि वर्ल्ड का लिटरेचर में the first ever reference of trans person is शिखंडी हमारे महाभारत जी में, जी और जिसकी वजह से पांडव ने महाभारत जीता. जी जी So how can we not empower people from the trans community and the queer community जहाँ पे हमारे existence वहाँ से है और वहाँ से एक इज्जत से है, so I feel that बोलने में बहुत इजी है कि ये वेस्टर्न वैल्यू है, लेकिन इन लोग जो है इनको इतना भी मालूम नहीं है कि 377 तो एक ब्रिटिश कॉलोनियल कॉलोनी हैंगओवर था. वो तो हमारे देश का पार्ट कभी पार्ट नहीं नहीं था. था बिल्कुल. तो एंड कभी भी लाइक व्हाट आई फेस द ट्रोल्स आई फेस, कभी भी मैं जब बातें करता हूँ तो लोग बोलेगा अच्छा आप, firstly they just presume that I'm from the Muslim community and they'll immediately say that आप जाओ वहाँ पे and वहाँ तो आपको पत्थर मारेंगे और death sentence, and I'm like हर चीज के लिए why do you have to take the worst example? We should be taking the example of what is beautiful, Beautiful. what is not, what is ugly, what is. And I belong to this country. This is my country. This is my motherland. So I don't need to take example of any country to fight for my rights, because this right was there in my history, in my culture, in my civilization, and in my existence. So no one has the right to deny me that. एब्सोल्युटली. तो इसी से मुझे याद आया कि रिसेंटली आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी अपने एक इंटरव्यू में एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट किया. सो डू यू थिंक द राइट विंग इज आल्सो चेंजिंग? बिकॉज मोहन भागवत का एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करना इज अ बिग Yeah. स्टेप. So I feel that it's very very. I think people are realizing across political parties, with awareness, with that in today's world, you know, it is very very important that it's a part of human rights, and no one who is intellectually aware wants to be clubbed या that we are not progressive, we are not valuing human rights. And I feel that when we look back, because ये हमारी culture की part है, so I feel it's actually easier to accept, and I am happy that these statements are coming out, especially क्योंकि अभी Supreme Court hearing है, and it is very very important that every political party comes out with a clear, वो चुपके चुपके हम I support बोलना कुछ मतलब नहीं. Come out and tell what you stand for. We deserve that answer. मैं बोलता हूँ कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हुआ था, तो वहाँ पे जज ने बोला था कि history owes an apology to the LGBTQI community. और मेरा कहना है कि society owes us an apology every single day. Every single day that they deny us equality, they should be sorry for it, And I feel that the time has come now that we all should be able to, but मैं हमेशा सोचता हूँ कि औरतों को कितने कितने साल लगे हैं, to, and they are still fighting फाइटिंग for, फॉर इट. equal representation, be it in the parliament. I mean, the ratios are all, and they have not given up.
So why should we? I mean, I get inspired every time I look at women activists. You know, they are the source of my inspiration, that they are fighting for centuries, and what they face is worse than what I have ever faced, and that gives us inspiration. And I said, okay, we'll keep fighting because there are so many of us who are fellow travelers who are fighting for equality for be it gender, sexuality, caste, class, various reasons. So ऐसा नहीं है कि वो हमारा ही साथ ऐसा हो रहा है बहुत लोगों के साथ. So when you realize that, then you realize, no, it's okay, because you are not the only one singled out. Yes. तो ऑनर पूरा जो भी मसला हुआ, जो भी चीज़ें हुई उसके बाद जितना भी आपको सपोर्ट मिला, तो क्या भारत भवन की तरफ से अपॉलॉजी आई आपको उसके बाद? No, not from Bharat Bhavan, not from the organizers, no formal here. But what would make me most happy, because I want to believe that the Madhya Pradesh government is progressive, is inclusive, is diverse, and I would be very, very happy if the government of Madhya Pradesh, along with this police, organize official function where we discuss LGBTQI narrative and where I'm invited, because I want to believe that the state is not supporting this hooliganism. That the state is not in support of these gundas, whoever they are, and the police would also, be able to give me security, and that I want to come back to the city I love, and I want to come there without fear, with respect. I'm sure, Onir, like ASAP, this problem will go away and there will be a big acceptance in the society that we are looking forward to it. And it was absolutely lovely talking to you. And thank you so very much for talking to TV9 Bharatvarsh. Thank you so much. Thank Thank you. you.